वैसे हमने थोड़ी सी बात करी भी, इस चीज पे टच करा कि बच्चों को इंडिपेंडेंस कितनी देनी चाहिए। तो जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मतलब अलग ही सोना चाहिए, कभी भी सेम बेड में तो सोना ही नहीं चाहिए चाइल्ड और पेरेंट को। तो इंडिया में तो एकदम फॉलो नहीं होता। इंडिया में तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता ये, बिकॉज अगेन द इमोशनल कनेक्ट इज वे टू हाई। प्लस माँ बाप के साथ 2 माँ बाप एक्स्ट्रा आते हैं ना, दादा दादी भी होते हैं, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। प्लस मौसी बुआ फूफा वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारे परिवार एक ही नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं फ्री में। सो एंड प्लस हम शायद क्रिप का कंसेप्ट अभी तक इंडिया में कभी आया नहीं। इट्स ओनली इन द मे बी उसको हाउ शुड आई पुट इट, इन वेरी फ्यू सिलेक्ट क्लास दैट दे यूज क्रिप्स। Yeah, most of them can't afford it simply or don't have the space enough to put it. But same bed should not be used. Once the child becomes 6 months of age, that he can manage his own body movements, he can manage his neck movements, the child should be put in a crib to sleep. In the same room, but should have a different bed. And gradually that bed should be shifted out of the room. That it's very subjective to every parent when they want to shift. But what is the right age? There's no right age practically saying. There's no right age because it all depends on the child and the parents. Some children will sleep from 1 year of age. Some children will not sleep till 7 years of age. Ideally, yes, 1.5 years of the age is the right time to shift them. By themselves in their room, Yeah, alone. In their room, alone. इतना 1.5 साल का बच्चा सो लेगा अकेले? Once he's habitual to sleep, see, it's not the condition, it's the bed which you sleep on. आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको पहली रात नींद नहीं आती ढंग से, because it's not the same bed, you're not comfortable with the environment. Now the child who's 1.5 year 2 years is comfortable with the home environment. He knows उसका घर है, वो उसका कमरा है। सबसे पहला belonging बनाना पड़ता है बच्चे के। If the child has a belonging to mother's room, he'll always feel कि ये तो मेरा ही कमरा है। So we need to make a room for a child कि this is your room, here आपकी सामान है, these are your clothes, this is your cupboard, this is your washroom, this is your bed, afternoon naps उधर होनी चाहिए। And gradually he'll start becoming comfortable. One fine day you decide he's supposed to sleep in another room, won't happen. It's a process. So that's why a different room for a child has to be there, where his things are there, his own belongings are there.